Hi all, welcome to RS Edu Corner. The last video रे आमे डिस्कस करथिले about control and coordination. Control and coordination ना आमे total दीटा वीडियो देखिले. Part 1 और part 2 रे सबु हमर control coordination थारो synaptic मोमेंट थारू आरंभ करी हमर ब्रेन टा टोटल कवर हेछि दीटांग वीडियो रे तो प्लेलिस्ट रे अछि आरएस एडु कॉर्नर को जाई देखि परिबे और मु ए वीडियो रे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दोछि जदि के न देखछन्ती देखि परिबे सो इन टुडेस वीडियो विल डिस्कस अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ओके तो एटा भी गोटे हमर इंपोर्टेंट टॉपिक एथुर निहाती भाबरे क्वेश्चन आसे हमर सब प्रकार एग्जाम रे सीएसटी हो एसएसटी हो ओटेटी हो जो प्रकार भी हमर एग्जाम हो सबुथिरे एथुरु प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रु निहाती गोटेटा क्वेश्चन हमको आसे तो बेसी बुझिबार किछि नाही सेतबई मु बेसी क्वेश्चन एथिरे नै जाईछि तो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करबा एंड मने रखिबा बिकॉज एथिरे बुझिला भलिया सेमति किछि नाही तो क्वेश्चन डिस्कस करिया पूर्वरु भाबुची आमे टिके मने पकई देबा हमर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को नै कि हमर समस्त तो ऑब्वियसली कांसेप्ट क्लियर थिबो फिर भी टिके आमे जस्ट मन पकई देबा तो मोस्टली आमे जेते बेले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कथा कहूचे आमे केतेटा ना हमर पांचटा हार्मोन कथा मोस्टली आमे भाबिताउ वन इज योर ऑक्सिन देन गिबरेलिन साइटोकाइनिन एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड ओके तो ये पांचटा हमर जो हार्मोन रहले प्लांट हार्मोन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट हार्मोन्स ओके सो ऑक्सिन गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन these are प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स ओके ए माने कोन करंती ना प्लांट रो ग्रोथ को प्रमोट करंती मु लिखि देई जेटी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड योर एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड these two are प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ओके तो तीनटा हमर रहिले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आ दुईटा रहिले एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड समान रहिले हमर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ओके एंड एथिलीन जोटा रहिला एटी देखंतु मु येलो कलर रे देइची कोन पाई because ethylene टा हमर कंप्लीट प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हिसाब रे वर्क करेनी ओके तो एथिलीन टा बेले बेले हमर कोन करे ना ग्रोथ प्रमोटर हिसाब रे भी काम करे सेति पई कि मु एटी येलो मार्क टा देइची तो एथिलीन ना हमर किछि तारो इफेक्ट अछि ग्रोथ प्रमोटर हिसाब रे बट मोस्टली इट्स अ growth inhibitor okay then another important thing about ethylene that ethylene is a gaseous hormone last year CST रे को गोटे शिफ्ट रे पकई थिला बोधे which one is the gaseous hormone so ethylene is the gaseous hormone एट देखो हमर केतरा क्वेश्चन आसी जाउची आ भीतर भी then आपनकर रहिला ABA that is abscisic acid which is known as stress hormone okay तो ए दिटा मन रखिबा gaseous hormone कहिले ethylene और stress hormone कहिले abscisic acid okay and yes one thing I would like to clear you here that abscisic acid is the stress hormone means that doesn't give stress to plant okay plant को सेटा stress दबनी plant जते बेले stress रे थिबो सेते बेले से प्लांट को से स्ट्रेस रु ताको रेस्क्यू करिवो ओके बा से स्ट्रेस रु ताको बंचेइबो दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रेस हार्मोन तो स्ट्रेस माने भाबिबानी कि इट गिव्स स्ट्रेस टू प्लांट तो एटा थिला हमर किछि फंडामेंटल जिंसो नाउ वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चंस so first question of today's video is growth in plants can be measured by photometer, axanometer, calorimeter and galvanometer. So right option is your axanometer. Growth in plants is measured by axanometer. Option 2. Clear? Then next question. The substance which originates at the tip of the stem and controls the growth elsewhere are that is auxin because the question kon कहउछि ना the substance which originates at the tip of the stem तो stem रो tip रे सेटा originate हबो and controls the growth elsewhere means growth रा को control करिवो सब आडे से okay but originate होउछि tip रे so that hormone is auxin then during seed germination its stored food is mobilized by
तो सीड जर्मिनेशन बेले आमर सीड रे जो फूडटा थाए दैट इज mobilized by your giberellin acid. So seed germination बेले seed भितरे आमर जो फूडटा थाए that is mobilized by giberellin. Option C. So option सब options मु पढ़ुनी only just मु जोटा right option सेटा कहि दोची because it will take more time to complete the video जेहेतु बहुत गुड़ा question रही जाइची तो आमे खाली मु खाली right option जोटा सेटा ही कहि दोची आपन मानकु. Then next question, root development is promoted by it's an important question. So root development is promoted by ethylene. Clear? Then one of the किछि एथिरे बुझिबार नाही खाली जस्ट मन रखिबार अछि किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देले चैप्टर टा आपनकर क्लियर हे जिवो. So next question is one of the commonly used plant growth hormone in tea plantation is very good question. Tea plantation बेले आमर commonly को growth hormone टा use करा जाए that is indole 3 acetic acid. Okay, that's an oxine indole 3 acetic acid. Okay, এটা ଗୋଟେ oxine ଟେ ଆମର natural occurring oxine IAA जोटा कहते ने IAA. The next question, one of the synthetic oxine is IAA, GA, IBA, NAA. Okay, IAA stands for indole acetic acid and GA for gibberellic acid. Then IBA that is indole butyric acid and NAA that is naphthalene acetic acid. Okay, so NAA naphthalic acetic acid is a synthetic oxide. Okay, तो मन रखिबा हमें हमर IA and IB these two IAA and IBA these two are natural occurring oxines. एट मन रखिदबा दीटा हमर देन सिंथेटिक ऑक्सीजन कहले हमर NAA एटा हमर रूटिंग हार्मोन हिसाब रे भी यूज करा जाय. आगो को क्वेश्चन अछि ता रिलेटेड. The next question, which of the following acids is a derivative of carotenoids? Okay, तो मन रखिबा हमें carotenoids रो derivative हमें कहूचे then that is ABA or abscisic acid. So option 3 is your right option. Then next question, foolish seedling disease of rice lead to discovery of very good question. तो फर्स्ट आम जाना जे फुलिश सीडलिंग कहले कौन ना फुलिश सीडलिंग होची हमर गोटे डिजीज जोटा कि राइस प्लांट रे देखा जाए. ओके, तो सेटा कौन हम ना हमर गछ गुड़ा सब स्लेंडर स्लेंडर हो जिवो आ लंबा हो जिवो हमर राइस रो जो प्लांट गुड़ा को पैटी प्लांट गुड़ा को एंड से जो सीड हम देखो फुलिश से टर्म टा देखो से सीड भितर हमर तार जो कॉर्न टा सीड रे भितर हमर जोटा दाना सेटा नथिबो. ओके, बालुंगा जोटा कहते धानर बालुंगा जदि के बुझी पारथिबा ताहेले that is foolish seedling. So that's a fungal disease which is caused by a fungus that is Gibberella fujikureo. तो से फंगस रो ना अनुसार एटा हमर हैला गिबरलिक एसिड. तो एटा भी आउट भी क्वेश्चन हुए जे गिबरलिक एसिड was first discovered in fungi. ओके, तो गिबरलिक एसिड टा हमर कोथरे को फंगाई रे मिलिथिला ना गिबरेला फुजिकुरियो. ओके, then next question, which of the following generally acts as an antagonist to gibberellins? Okay, तो antagonist कहिले हमर कोन ना ऑपोजिट बुझाए. तो कोउटा हमर एक्ट करे को हार्मोन टा हमर एक्ट करे opposite to gibberellin. Okay, gibberellin opposite कहले आमे ABA abscisic acid को ही बुझिबा. Okay, important question मन रखिबा एटा.
Then pruning of tea plant is done to discard the effects of तो टी प्लांट रे आमर जो प्रूनिंग करा जाए प्रूनिंग माने बुझ परछो ताको काटी दबा जो तार अग गुडा छिंडे दिया जाए तो प्रूनिंग ऑफ टी प्लांट इज डन टू डिस्कार्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन ओके तो ऑक्सिन न आमर काम होची कोन ना ऑक्सिन सब बेले आमर कोन करबो ना सूट गुडा को बढ़े बढ़े चलियो ओके तो जदी टी प्लांट रे आमर टी रे एक्चुअली आमर को जिंसटा हार्वेस्ट करा जाए तार लीफ टा तो सेठी आमर कोन लीफ दरकार बेसी आमर तार बेसी बढ़िया गछ बढ़िया बेसी लंबा हवा दरकार नहीं दैट्स व्हाई ताको कोन करंदी ना प्रूनिंग कर देले तार जो एरिया रे ऑक्सिन अछि सेटा छिंडे दिया जाए जा फल कि गछटा बेसी बढ़ी पारे नहीं फोलिएज हे जबा हमर पत्र बेसी सेतरे हे जाए then which of the following is not a function of गिबरलिक एसिड तो गिबरलिक एसिड रो फंक्शन कोडा नुए ना हमें बोल्टिंग जानिचे बोल्टिंग मोल्टिंग सीड जर्मिनेशन एंड डिलेड सेनेशन एटा सब हमर आसीबो गिबरलिक एसिड अंडरले बट राइपेनिंग occurs due to what ethylene ethylene जोगु हमर राइपेनिंग हुए ओके so ripening is not a function of गिबरलिक एसिड then the plant hormone which closes the stomata in stressful condition is देखा मु कहितली तुमको जेतले स्टार्टिंग रे मु जो इंट्रोडक्शन टा देली सेथरे मु कहितली जे एबी एटा हमर होची कोन ना स्ट्रेस हार्मोन and that doesn't give stress to plant in place that helps the plant to overcome the stressful condition okay so here is the question the plant hormone which closes the stomata in stressful condition okay जेतेबेले stressful condition आसे at that time हमर स्टोमाटा कोन हो जाए क्लोज हो जाए जेतेबेले हमर माने कर खरा जोर होउची तो गछर स्टोमाटा कोन होची बंद हो जाउची नहले कोन वाटर लॉस हो जिवो गछ मरि जिवो ओके तो सेही कंडीशन ने हमर की हेल्प करूची एबी abscisic acid then 2,4-D is an effective weedicide ओके weed मारिया पई एटा व्यवहार करा जाए 2,4-D तार फुल नेम होची हमर कोन ना 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड then which breaks dormancy of potato tuber the dormancy of potato tuber जदि कहिबा it's an important question which breaks dormancy of potato tuber that is gibberellin gibberellin रो हमर बहुत सारा फंक्शन रहउसी then which one among the following chemicals is used for causing defoliation of forest trees okay तो आमे यार पूर्वरु गोटे क्वेश्चन डिस्कस करले हमर वीडिसाइड हिसाब रे कोटा यूज करा होची ना 2,4-D टा ओके 2,4-D और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड that's also used for causing defoliation of forest trees okay 2,4-D then next question widely used rooting hormone is starting रे कहली NAA synthetic oxygenata NAA टा हमर होची widely used rooting hormone NAA that is naphthalene acetic acid then femaleness is induced in plants by plants रे हमर femaleness टा induced हुए by auxin मन रखिबा हमर auxin जोगु भी femaleness हुए and in some species it is found that ethylene is also responsible for inducing femaleness clear so for this question ethylene is not in the options that's why your auxin is the right option तो auxin टा हमर मोस्ट appropriate भी femaleness पई हमर auxin टा and maleness पई gibberellin टा मन रखिबा then very good question is here that coconut milk factor is dash that is cytokinin ओके कोकोनट मिल्क बुझी पारछ तो कोकोनट रे हमरो जो व्हाइट पोर्शन टा भीतर रहउची सेटा गोटे कोन माने मिल्क हिसाब रे थाए तापर सेटा नडिया रे
कन्वर्ट हुए तो कोकोनट मिल्क कहले that is cytokinin and cytokinin means that's natural occurring cytokinin, okay, and that is named as gelatin. Gelatin term ଶୁଣିଥିବ କୋଉଠି ବି ଦେଖିଥିବ. So gelatin is a natural occurring cytokinin which is found inside the coconut milk factor. Clear? मन रखिबा एटा. Very important question. Then which plant is LDP? LDP stands for long day plant. Okay. The long day plant कहले first बुझिबा हमें long day plant कोन ना long day plant means तांको day time टा बा light तांको बेसी दरकार होउतिबो. Okay. Day तांकर long होउतिबो आउ night तांको पई short होउतिबो. Okay. तो बेसी light दरकार बेसी टाइम पाइन लाइट जो प्लांट को दरकार है those plants are called as LDP or long day plants. So your example is spinach. And if you will talk about the other long day plants then those are wheat. आउ जदि किछि एग्जांपल हमर दिए wheat, then आपनकर oat, okay, beet, barley ए सब जातीय जो गुडा आसिले those are long day plants. Okay. Then vernalization stimulates flowering in मन रखिबा carrot रे. Okay. Then photoperiodism was first characterized in tobacco by Gardner and Allen. Then next question, two synthetic oxygens are तो हमें डिस्कस करले पूर्व डिस्कस करले जे हमर IAA आउ IBA ए दिटा होजंती हमर natural occurring oxygens and 2,4-D and NAA those are synthetic oxygens. Then which phytohormone promotes falling of old leaves whereas inhibits falling of young leaves? Okay. तो हमारा old leaf को fall करिबारे help falling रे help करे and young leaf को पड़िबारु बा falling रु inhibit करे बा रक्षा करे. अर्थात मोट ऊपर कह गले हमर जे पुराना हे जाथबा old हेथबा leaf को झड़े दे but young leaf को झड़िबारु रक्षा करे. That is oxygen. Oxygen ना हमर मेन काम हो जे एटा ना. Then which oxygens are used in diluted form to produce parthenocarpic fruits? That is indole acetic acid and indole butyric acid. IAA and IBA are used in diluted form to produce parthenocarpic fruits like your tomato. Parthenocarpic fruit कौन? Parthenocarpic means हमर जोटा before fertilization जो fruit गुड़ा produce होती हमर pineapple हैला seedless mostly हमर seedless pineapple जोड़ा हैला seedless tomato हैला seedless grapes हैला ए भलिया जो fruits गुड़ा which are produced before fertilization or pre-fertilization product. Parthenocarpic fruits are pre-fertilization products. So here IAA and IVA are used. Then which of the following oxygen is widely used as weedicide? ऊपर हमें discuss कले NAA. Then which type of plants can blossom throughout the year? तो वर्ष सारा फुटुथिबा प्लांट को आमे कोन कहिबा? That is day neutral. Okay. Here option 4. सब बेले फुटुथिबो माने कोन ताकू जेती टाइम में लाइट मिलू जेती टाइम डे मिलू ता जेती टाइम नाइट मिलू तार किसी प्रॉब्लम नाही. That's why these are day neutral plants. Then
Which of the following is an example of short day plant? Okay, तो short day plant कहले आमर tobacco. Okay, because आम ऊपर कले sugar beet radish wheat एरा सब आमर थिला long day रे. So and yes, long day, short day, banalization, photoperiodism ए सब रो मु क्वेश्चन काहेकि नै छी because जो माने CST पिला अछंती तांकर सिलेबस रे अछि हेटा. That's why किछि क्वेश्चन खाली जस्ट टच करछि. Then most of the winter flowering plants belong to day neutral plant, short day plants, long day plants, plants, short day plants. Okay, winter plants गुरा हमरो सबले short day plant हेइतांती because कोन हमरो शीत दिने कम खरा मिले तो सेतिरे से माने भलो flowering करंती. That's why these plants are short day plants. Then cucumber and tomato are example of एबे कहिली cucumber आउ tomato ए सब होचंती हमरो काहारो example short day रो. Then gibberellins were first isolated from कहली एटा फर्स्ट क्वेश्चन ने कहितली बोधे गिबरेला fungi. Okay, gibberellins were first isolated from fungi and auxins were first isolated from human urine. Last year question जो CST रो डिस्कस करथिली सेतरे थिला inhibitor. Then which is a growth inhibitor? Growth inhibitor कोउटा हमरो ना APA abscisic acid because हमरो NAA एटा हमरो ऑक्सिन रहउची रूटिंग हार्मोन हिसाब रे यूज करा होउसी. देन हमरो IAA एटा भी ऑक्सिन फॉर्म रहउची एंड गिबरेलिक एसिड त हम जानि जे सेटा जाउचंदी हमरो कोन ग्रोथ प्रमोटर हिसाब रे स्टार्टिंग रे कहली. देन बाकी बचिला हमरो ABA एटा डायरेक्ट हमरो ABA आउ एथिलीन जाउथले कोथरे ना ग्रोथ इनहिबिटर हिसाब. Then florigen is believed to assist in flowering. Florigen means flowering. Then which hormone act as a substitute for low temperature treatment? The low temperature treatment पाई आमरो को hormone टा substitute, that is gibberellin. Then hormones act for maleness. Maleness पाई मु कहितली हमर femaleness पाई auxin and maleness पाई gibberellin. Direct question. Then the site for auxin production is देखो leaf tip देइची, flowering bud देइची, but most appropriate is meristematic region of shoot. The shoot रो जोउठी meristematic region रहुची, that is the site for auxin production. Okay, not at the meristematic region of root. Then vernalization indicates low temperature treatment of seeds before sowing. Okay, then abscisic acid controls. Abscisic acid टा हमरो कौन कंट्रोल करे? Leaf fall and dormancy. Leaf fall and dormancy को कंट्रोल